गुजरात एटीएसे आतंकीओनी मास्टरमाइंड युवतीने पकड़ी पाड़ी छे। आ महिला अन्य कोई नहीं परंतु आतंकी संगठन अल कायदानी मास्टरमाइंड छे, जे पाकिस्तानना इशारे काम करती हती, जेनो मास्टर प्लान हतो भारतमां आतंकनुं नेटवर्क फैलाववानुं, आतंकना मॉड्यूलने बहु ज मजबूत करवानुं अने पोताना षड्यंत्र थकी भारतमां आतंकी घटनाओने अंजाम आपवानुं। आतंकवादी खौफनाक मास्टरमाइंड शमा परवीन हवे गुजरात एटीएसना सकंजामां आवी गई छे। माथा पर हिजाब पहेरेली आ महिलानी एटीएसे कर्नाटकना बेंगलुरुथी धरपकड़ करी छे। तपासमां खुलासो थयो छे के आतंकी संगठन AQIS चलावनार महिला आतंकवादी संगठनना मुख्य हेन्डलरोना संपर्कमां हती। आतंकी संगठन वधु मजबूत बनाववुं अने केवी प्रवृत्ति करवी ए शमा परवीन नक्की करती हती। अगाऊ पकड़ायेला 4 आतंकीओ पण आ युवतीना मार्गदर्शनमां काम करता हता। ते घरमां पोताना रूममां एकली रहती हती, माँ बाप अने भाई साथे रहती हती, तेमज पाकिस्तानना नंबरोना संपर्कमां पण हती। बीकॉम सुधीनो अभ्यास करनारी शमाना इंस्टाग्राममां 3 થી વધુ अकाउंट्स मळी આવ્યા છે, જેમાં आतंकी नेटवर्क मजबूत थाय अने आतंकीओना भड़काऊ भाषणना विडियो पोस्ट करी हती। ऑपरेशन सिंदूर समयनी કેટલીક પોસ્ટ પણ મળી આવી છે। એ જે છે એને ત્યાંથી જ એને ઘરથી જ ડિટેન કરીને અમે લોકો અહીંયા ટ્રાન્ઝિટ વોરંટ ઉપર લઈને આવ્યા છીએ। પ્રાઇમા ફેસિયાનો ફોન ત્યાં જ અમે સીઝ કરી દીધા હતા, પરંતુ એની પૂછપરછમાં જાણવા મળેલ છે કે આ ઘણા બધા પાકિસ્તાની જે વોટ્સઅપ નંબર છે એની જોડે કોન્ટેક્ટમાં હતી। સાથે સાથે પાકિસ્તાન સિવાય પણ બીજા કન્ટ્રીઝ જોડે પણ એના સંપર્ક છે, આ એના દ્વારા બતાવવામાં આવેલ હતો। અમદાવાદ આવેલા જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ ગુજરાતના લોકોને કાશ્મીર પધારવા આપ્યું છે આમંત્રણ। ગુજરાતમાંથી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં લોકો જમ્મુ પ્રવાસે આવતા હોય છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં બંધ થયેલું ટુરિઝમ પાટે લાવવાના પ્રયાસ। दो दिन का यहाँ पे गांधीनगर में टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो उस सिलसिले में मैं और मेरे साथी यहाँ आए हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि दोबारा गुजरात से जो है अच्छी खासी तादाद में हमारे विजिटर जो हैं दोबारा आना शुरू करेंगे।